1947 पर इंडिया रे इकोनॉमी रो अवस्था कोन थिला तो 1947 पर जब तमे देखिबो आवर आउटपुट if you try to talk about from the perspective of output, what is output? Basically जो export वगैरह हमको करियर अछि तो our GDP was decreasing if output will decrease. That means I am saying if export decreases, that means the output will also decrease, or output decreases, that means export will decrease, and so the output decreases, that means production only, that means GDP is also decreasing. So to increase the GDP, we need to have more and more number of production. तो बर्तन कथा होची जदि देशर तमे GDP बढ़िया को चाहूछ ताल तमो करियर कोन अछि प्रोडक्शन एंड कथा होची प्रोडक्शन तमे जो करिवो हमर ता पूर्वरु before 1991 what was the production? It was related to agriculture sector, but आमे कहूछ हमको प्रोडक्शन करियर अछि एंड फिनिश्ड गुड पठेवार अछि ठीक अछि एग्रीकल्चर तो प्राइमरी सेक्टर ता माने ताकू हमें रॉ मटेरियल वाला यूज कर परिबो इन सेकेंडरी सेक्टर करेक्ट नो तो बर्तन हमको जदि फिनिश गुड पाइबार अछि दैट मींस ताकू हमको सेकेंडरी सेक्टर प्ले करसे पड़ियो दैट मींस सेकेंडरी सेक्टर रे भी हमको प्रोडक्शन बढ़िया अछि जोथि पे हमें ग्लोबलाइजेशन आडू को जिवु सो हियर व्हाट दे थॉट इज द कंट्री मस्ट ग्रो दैट मींस द आउटपुट मस्ट इंक्रीज जदि कंट्री को बढ़िबार अछि देन आउटपुट मस्ट बी इंक्रीज बट because of the policy that East India Company Britishers they had right the way they implemented the policy output was low due to Britishers economic policy माने ट्राई करते कोन बहुत सारा एक्सप्लोर करिया पे भाबो तुमको जने तमरो जने तुमको जने आसी कि कहयो कि हमें से जमीदारी प्रथा रे तुमको एक्सप्लोर करिवो देन तमरो थॉट प्रोसेस कोन आसे कि भाई मु तार काम करिवि जोथि पई कि आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हिजबो ट्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे जब तमे देखिबो से माने ट्राई करले कोन रॉ मटेरियल नै कि पळेया पई जेतले से माने रॉ मटेरियल नै कि पळौथिले से माने इंड्यूस करूथिले इंपोर्ट अधिक करी कि इंडिया को बाहरु मींस फॉरेन रे तांकर इंडस्ट्रियलाइजेशन थिला जोथि पई कि रॉ मटेरियल इंडिया रो नै कि गले एंड से माने इंपोर्ट करैले कोन इंडिया को ड्रेसेस वगैरह टेक्सटाइल वगैरह जिनस तो वर्तमान जदि इंडिया रो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नष्ट कले दैट मींस आउटपुट अगेन कमी गला सो ब्रिटिशर्स मानकर जो इकोनॉमी पॉलिसी थिला जोथि पई कि बिफोर 1947 द policies were in such a way that the output was decreasing. Because the output was decreasing after independence, the first thing that government tried is due to so many challenges and constraints, our output could able to increase up to 3.5% of GDP till 1975. Means with those challenges and constraints जोटा कि ब्रिटिशर्स माने क्रिएट करथिले तापर इंडिया रो जो डिफरेंट विल टॉक अबाउट द 5 ईयर प्लान राइट से जो 5 ईयर प्लानिंग वगैरह हमें कले ताकू हमें ट्राई कले कि हमर जीडीपी को हमें बढ़ेबा केमि बट हमें जत्ते भी ट्राई करूथिले जीडीपी बढ़ी पारुनथला एंड 3.5% जाय ही हमें मैक्सिमम बढ़ी पारुथे एंड दिस 3.5% इज कंसीडर्ड टू बी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ because the India was considered to be a Hindu nation. Okay, so this growth was fixed till 1975. So जत्ते प्रकार तमे नै कि आसुथिले माने लाइक अप टू 1980s जाए कि डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ करबा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फेलवर हला हमें एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड ग्रीन रिवोल्यूशन बट स्टिल we could able to manage up to what percent 3.5%. So what happened 1980 this output started rising suddenly 1980 see forget about 1991 जो तरे के LPG ता पूर्व मु कहू 1980 रे आउटपुट स्टार्टेड राइजिंग दैट मींस there is a turnaround breach the threshold of 3.5% आगुर जो 3.5% जोटा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ थिला सडन आउटपुट राइज हैला आउटपुट राइज एथि पई हैला जोथि पई कि से 3.5% रो जो जीडीपी सेटा कटि कि वर्तमान 5-6% वाला ग्रोथ स्टार्ट दिखा वाला तो वर्तमान कथा हो व्हाट आर द फैक्टर्स और व्हाट आर द नॉन फैक्टर्स व्हिच लीड टू 1980 वाला आउटपुट राइजिंग तो कौन हेतै पारे तो 1980 पाई हम there can be different factors but we will try to talk about what can be the non factors कोडा नथिला फॉर एग्जांपल we know 1991 रे लिबरलाइजेशन हितला LPG जोटा आज मु कहिबी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो लिबरलाइजेशन इन द मींस कि we are trying to open our economy कि जदि फॉरेनर को माने अछंदी से माने आसी कि हम एरिया रे इंडस्ट्रियलाइजेशन करि परिबे तांको तमे सफिशिएंट अमाउंट रो दियो तमे कोन चांसेस दियो तांका पई इकोनॉमी को ओपन करो ताकि से माने आसी कि सफिशिएंट अमाउंट रो इन्वेस्टमेंट करंतु सो obviously this liberations that we brought in 1992 that means this is a non factor तो liberalization गोटे नॉन फैक्टर हे गला then there is
फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट वन वे इज लिबरलाइजेशन तमे जदी को गोटे बिजनेस करिया को चाहू जदी तम बिजनेस रे मु कहबी कि मु इन्वेस्ट करबी देन तमे पैसा पाइलो गोटे बाहर लोक पैसा पाइलो देन तमे से पैसा टाको यूटिलाइज करिकी अधिक अधिक प्रोडक्शन करबो बट कथा होची ए लिबरलाइजेशन कांसेप्ट आसला 1992 बट वी आर टॉकिंग अबाउट 1980 रे इंडिया रो इकोनॉमी रे जीडीपी 3.5% रु अधिक होइतला दैट मींस ऑलरेडी दे ट्राई टू ब्रीच द थ्रेशोल्ड ऑफ 3.5% but liberalization was not a factor there. Coming to the next one, how we can increase the rising of output जदि आमे कहले कि लेबर मार्केट रिफॉर्म कथा होची जो तमरो अछि कि लेबर माननकु तमे एतिकी घंटा काम करे दे परिबो ताठ अधिक करले तम नारे केस चलिबो तो ता ऊपर जदि तमे कहबो कि जदि ताकू आमे रिफॉर्म आनिबो कि टिके कोहळ कर दबु राइट रिलैक्सेशन दबु कि हां ठीक अछि कॉर्पोरेट नॉट कॉर्पोरेट बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो माने अछंती तांको आमे कहबो कि नै नै तमरा सेमति किछि आमे तम ऊपर कोनोसी कार्रवाई करिवनु जदि तमे लेबर को 5 घंटा जगह 6 घंटा खटौछ so what they try to do is like if they will do labor norms ease out means business get an edge so utilize the labor resource on their will basically the businessmen they will try to utilize the labor on their will see these are mains content okay why mains content because you should understand like post 1947 what is going on in our Indian economy okay so what I'm saying is this is also a non-factor because these labor related reforms that we brought around in 20s okay कि 2000 मसिया परठु आमे एगुडा लेबर नॉर्म्स इज आउट करते किंतु जदि लेबर नॉर्म्स इज आउट करिवो दिस विल बी अ फैक्टर व्हिच विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बुझिला ना बुझिला फॉर एग्जांपल तम घर रे कंस्ट्रक्शन काम होची जदि तमे लेबर मानन को पूरा स्ट्रिक्टली रूल रहइबो कि लेबर माने 5 घंटा ही काम करबे देन तम घर रो जो कंस्ट्रक्शन काम लेट ही पारे किंतु जदि कोआ हो कि सेमिति कोनोसी रूल नाही जदि मालिक चाहिबो लेबर मानन को 5 घंटा जगह 7 घंटा खटेई पारिबो ताहले तमर कंस्ट्रक्शन काम जल्दी हबो हां कि नहीं Yes, sir. Okay. So this is what we are talking about. These will try to increase the output growth. जोटा कि हमें कहूचे कि 1980 रे आउटपुट ग्रोथ हैला तापाई हमें देखुचे कि एई पोजीशन थिले एई थाई पारता किंतु लिबरलाइजेशन नथिला ना ही लेबर मार्केट थिला सॉरी लेबर मार्केट रिफॉर्म थिला नेक्स्ट कंजम्पशन डिमांड रो केवल जदि डिमांड बढ़िला ताहाले भी आउटपुट बढ़िबो जदि कंजम्पशन इंक्रीज हैला व्हिच विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ताहाले आउटपुट बढ़िबो किंतु कथा होची गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस डिमांड थ्रू फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट जो ये जो डिमांड रो खेल केते बेले हुए जेताले मु कहबी कि टैक्सेशन को मु कमेई देली तमे जोठी 100 टंका रे 20 टंका टैक्स दवा कथा मु कहबी कि तमे 100 टंका बर्तन 10 टंका दबो दिस इज व्हाट वी कॉल this influence government is trying to influence the demand means trying to increase the demand through fiscal policy जोटा बजट रो मु कोन कहली जोठी 20 टंका टैक्स पाया कथा सेठी मु 10 टंका पाइबी दैट मीन्स 10 टका कहा पाखरे रहइबो जो लोक टैक्स दवा कथा से लोक 10 टका ता पाखरे रहइबो जदि गवर्नमेंट मात्र 10 टका नेला दैट मीन्स गवर्नमेंट को गला मार्केट रो अधिक पैसा रखिला जोथि में मार्केट डिमांड बढ़ो ट्रू वी ऑलरेडी डिस्कस दिस so this is what we call fiscal expansion which will lead to demand increase that means having extra cash at people's hand for example there is manrega means you are trying to create asset without much skill get money expansionary thought process so this is like give मनरेगा 100 days रो वर्किंग गारंटी तो जदि सेथिरे तमे दउछ को लोक मानको जो माने अनस्किल्ड लेबर तो सेही लोक मानको लगे कि तमे एसेट क्रिएशन करोछ फॉर एग्जांपल से माने पोखरी तयारी करले देन पोखरीटा कोन करा ओटे एसेट सेथिरे तमे पानी रहिला देन माछ रहिला माछ चाष सेही लोक मानको लगे कि तमे लेबर काम करी कि रास्ता घाट तयारी करूछ जोटा कि फ्यूचर रे गोटे इनकम जनरेट करिवो दैट मींस you are trying to utilize the unskilled people for some asset creation giving those unskilled people money which will increase the money in the market and this is like what we call expansionary thought process but these all things were not there during 1980s then what was the factor which tried to kill the output so the factor was the attitude of the government towards the economy that got changed कि गवर्नमेंट रो जो एटीट्यूड थिला इकोनॉमी को देखिबा पई सेटा से थिला दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए एटीट्यूडिनल शिफ्ट गवर्नमेंट कोन ना एटीट्यूडिनल शिफ्ट हला ता एटीट्यूड रे शिफ्ट आसा कोन हमर जो इकोनॉमी अछि जोटा कि हमर अछि लाइक फार्मिंग ही गला या फिर जो छोटो छोटो बिकॉज़ ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम 5 ईयर प्लान ही जाइतिला सो से माने स्टार्ट करथि छोटो छोटो इंडस्ट्री ग्रोथ करिया so this attitude is called pro business attitude they are trying to promote the existing business house means
existing business house no more restriction on production and acquiring extra capital to enhance their production process. ता पूर्व कौन था कि existing जो business house गुड़ा था तार ऊपर restriction लगे रखते कि भाई 8 अधिक तमे production कर परिबनी 8 अधिक तमे raw material consume कर परिबनी because ताकू लागुतला जदी 8 अधिक तमे raw material वगैरह consume करले that means से माने may be behave कर दे परिबे exploiting the local people. For example गोटे food processing industry भाव कि से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेट्स सपोज से गहम आनिकी अट्टा बनौची करेक्ट तो अट्टा जो बनौची जो इंडस्ट्री अछि ताकू कहै कि भाई तू मैक्सिमम एतिक अमाउंट रो प्रोक्यूरमेंट करि परिबो गहम ताठ अधिक करि परिबो काहे कि जदी तू प्रॉफिट पाइन देखिया को गलो मे भी हे पारे देयर इज ए चांसेस दैट तू कोन करिवु लोक मानको जोठू गहम आनिबु फार्मर मानको तू हरिण करि दे पारू करेक्ट एंड से मानको तू एक्सप्लोर करि पारू ए भलियार थॉट प्रोसेस थिला बिकॉज़ ए जो थॉट प्रोसेस एटा कोठु आस्थिला ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स मानकोटू राइट तो से थॉट प्रोसेस को सेमान ट्राई कले बंद करिया पई एंड बिजनेस हाउस को मूव करिया पई कि ठीक अछि आमे से जो रेस्ट्रिक्शन तो ऊपर थिला कि ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द एक्स्ट्रा कैपिटल से गुडा हम रिमूव करि तो हमें जहां पैसा मींस नॉट आउटसाइड एटलीस्ट इनसाइड रे बिकॉज़ आउटसाइड वाला कांसेप्ट तो सेटा हमें लिबरलाइजेशन में देखिबा करेक्ट नो कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफडीआईज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से गुडा पर्यंत आसी नथला बट से माने बिजनेस को ग्रोथ करिया पई जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट ओडा थिला बिजनेस पई से गुडा को से माने बंद कर देले सो आवर ग्रोथ स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम 1980s not 1992 and 1992 we tried to accentuate the growth accentuate in the sense आमे ताको एक्स्ट्रा पुनी आगुरी ऐड कले कोन ना डिफरेंट पॉलिसी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एलपीजी so 1980s re India ro economy re 1980s re the Hindu rate of growth that we tried to breach that growth which was just 3.5% of GDP basically so we tried to increase it how we could able to increase it through the attitudinal shift कि गवर्नमेंट रो जो एटीट्यूड थिला से एटीट्यूड चेंज हला फॉर ए प्रो बिजनेस एटीट्यूड okay then 1990s came where we tried to include this liberalization privatization and globalization which again try to help this business attitude again business growth again help करा through liberalization means बाहर से माने प्राइवेटाइजेशन करलो जोडा कि गवर्नमेंट ओन करतला सेगुडा को तमे ट्राई करो भंडा रे ठीक ठाक काम करिया पे ठीक अछि बिजनेस हाउस को ट्राई करो से माने ताकर कंट्रोल करा दो ग्लोबलाइजेशन ताकू तमे ग्लोबल मार्केट रे ओपनिंग कला तम इकोनॉमी टा ग्लोबल मार्केट रे ओपनिंग हला तमे से लाइक एक्सपोर्ट कला इंपोर्ट कला देन ग्लोबल प्लेयर्स आसिले तम मार्केट रे बसिले तमको ग्लोबल मार्केट रे एक्सेस मिलला so this is what we try to do like we try to accentuate the growth of our economy and 2020 our output is rising more than 7% GDP okay so this is what how 1957 till 24 we are looking at it but there is a condition so earlier we were pro business approach now also we are what we are doing is a pro business approach but World Bank report came they told India should follow pro market approach for more growth so what is the difference between pro business approach and pro market approach pro market approach is nothing but you are trying to promoting the competition that will government ensure the level playing field for everyone that is related to pro market approach see the government at one side we are trying our best to go for pro market approach for example we are increasing startup India correct startup India रे try करछे नुवा ना innovation एने पे but the same time government has this pro business approach also for example if you talk about aviation industry से जो उड़ा जहाज वगैरह हमर की अछि टाटा go air loss spicejet loss indigo struggling but they are somehow trying to get income but they are still struggling telecom sector Jio that means still we are promoting pro business approach means गोटे particular industrial house को हमें try करते support करिया पे for example talk about से जो port related power अदानी टेलीकॉम रिलेटेड जो एविएशन इंडस्ट्री टाटा तो जदि हमें सेथरे कंपटीशन नै किछि फॉर एग्जांपल रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट एनपीसीआई करेक्ट एनपीसीआई रे हमें कोन करू जदि एनपीसीआई होची गोटे अम्ब्रेला यूनिट जदि ता पई हमें गोटे कॉम्पिटिटिव मार्केट नै किसिबा ताहाले सेठी कोन हबो obviously competition market आसले बोथ मान दिजण मानकर ग्रोथ हबो इनोवेशन हबो डेवलपमेंट हबो हां कि नै इज दैट क्लियर Yes, sir. okay so this is just like way forward from World Bank report what India is trying to do is uh, what World Bank report what India it is saying to India that India should follow pro market approach for more growth
Anyway, we are having 7% growth, but to have a faster growth, like more than 7%, what we need to do is pro market approach. Hope it is clear, right?